So, good morning, students. So, today we will start the new chapter, that is a company account, and chapter name is your accounting of share capital. So, from examination point of view, share capital is the most important chapter because we are getting maximum questions from our share capital. Okay. So, today only we will try to understand the concept. Okay, how to pass the journal entry and what do you mean by share capital. So, listen. So as we have already read in partnership, okay, partnership we are preparing revaluation account, capital account, partners, your balance sheet, okay. In fundamental we have read, retirement we have read, admission we have read, dissolution we have read, okay. So what about your company? As we know that company is an artificial person created by law, okay. So there has been certain rules and regulations which has been prescribed in the Companies Act 1956. Okay, so that rules and regulations which we are required to follow while preparing our financial statement, that is the financial statement of company. Okay. So first of all, what happens? So company, what they want to do? Company, they want to raise the capital. Okay. So what option company do have? Company can raise the capital through its what? Through its shares. Through its shares. Okay. So what do you mean by the term shares? Shares means what? Company's capital has been divided into small parts or small denominations. Okay, so such part is known as your what? Such part is known as your shares. Suppose company has issued rupees 1 lakh. Say rupees 1 lakh. Okay, company had issued rupees 1 lakh through the issue of shares. Okay. So, company has raised the capital of rupees 1 lakh through the issue of shares. The amount which has been raised from the issue of shares, such amount would be considered as what? Such amount would be considered as share capital. Okay. So, this is the total amount of shares. Okay. So, 1 lakh rupees is their total capital. That means if you divide into the shares, suppose one share cost is your rupees 10, 10 रुपए का share है. So how much would be the number of shares? Rupees 1 lakh divided by 10. That means how much company has raised shares? Number of shares was how much? Number of shares is your 10,000 shares. Okay, 10,000 shares. So that is the meaning of what? That is the meaning of your shares. So company, what they can do? They can issue the shares through by giving its subscription through the public. Okay. So there has been certain procedure. अच्छा, एक company what they do? Company start होने के बाद company do have your what? Maximum capital. Company has to show the maximum capital which is to be shown or which is to be raised through the lifetime of the company. Okay. So now there has been certain procedures for the issue of shares. Okay. तो shares क्या procedure क्या है? First of all, what happens? Company, what they do? Company will issue the prospectus. Company will issue the prospectus to the public. Okay, and the public, the person who are interested to purchase the shares, what they will do? They will have the, they will fill up the application form. Okay, they will give their full details and how much number of shares they are required to purchase. Okay, so company has to pay. Okay, so company has to receive the amount in the form of application. Okay, so that is known as what? That is known as your application money. Okay, so that is your first step. Okay, second one is your allotment money. Second one, allotment money. Third one is your first call amount, and fourth one is your second call, or you can say final call amount. ठीक है. तो एक्चुअली कंपनी क्या करती है? कंपनी सपोज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज रुपीज 100. ओके, 100 रुपए का कंपनी का शेयर है. सो कंपनी व्हाट दे डू? कंपनी कैन नॉट रेज इट्स कैपिटल ड्यूरिंग कलेक्टिवली. एक साथ में कंपनी 100 रुपए कंपनी क्या करती है? कंपनी नहीं मांगती है. कंपनी व्हाट दे डू? कंपनी हैज डिवाइडेड दिस अमाउंट. सपोज कंपनी बोल रहा है एप्लीकेशन में कितना पैसा आपको देना पड़ेगा? 20 रुपया. अलॉटमेंट में कितना पैसा देना पड़ेगा? 30 रुपीज.
Again, first call and final call divided into two equal part, rupees 25, rupees 25. And total amount is how much? Total amount is rupees 100. That means company is raising the amount of shares with the help of, सबसे पहले क्या होता है, application money, उसके बाद क्या होता है, allotment money, उसके बाद तुम्हारा installment में the rest amount would be payable in installment. First installment is known as your first call amount and second installment is known as your second call. So rest of the amount is to be payable in equal installment. Okay, equal installment means your call money. Call money का मतलब क्या होता है? It is the amount which has been called by the company. Okay, so call money either there could be share first call or there can be share final call. And what do you mean by allotment money? Allotment money का मतलब क्या होता है? Suppose company had issued say 10,000 shares. Company had issued. Company issued किया है 10,000 shares. Okay, and there has been the applicant for rupees for 15,000 shares. So 15,000 shares. There has been an applicant for how many shares? For 15,000 shares. That means out of that, company has got the option. Company what they can do? Either they can utilize the application amount of money through allotment, or company can refund the amount back to the shareholder. तो company क्या करता है? Company will give the allotment. Okay, allotment means company will give the chance to opt for share. Out of 10,000, out of 15,000 applicant, company will opt for how many applicant? 10,000. Okay, so that process of allotting is known as what? Is your allotment, share allotment, and the amount which has been paid by the shareholder. Okay, in case of what? In case of allotment, when it becomes due, it will be known as what? Allotment money. Okay, similarly the rest amount would be payable in equal installment. So the equal installment is known as your share first call and share final call. इसका मतलब क्या हुआ? In each and every question we have to solve the question. Okay, so shares question we will get, first of all we will get application money. चार installment में distribute किया गया है. एक है application, एक है allotment, एक है first call and second is your second or final call. Okay, अच्छा, one thing I want to tell, कंपनी एक साथ में कंपनी पैसा क्यों नहीं मांगती है कंपनी? क्योंकि जब कंपनी में जब पैसा आता है, ओके, सो शेयर होल्डर को क्या अच्छा रहेगा? शेयर होल्डर विल पे द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट. शेयर होल्डर 100 रुपया एक साथ में नहीं देके वो क्या करता है? पहले 20 रुपया दे देता है. ठीक है, एप्लीकेशन के फॉर्म में प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है, उसके साथ में 20 रुपया दे देता है. इसके बीच में फिर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच में 2 से 3 महीना लग जाएगा. 2 से 3 महीना लग जाएगा मतलब क्या? कंपनी का अपना प्रोसीजर करने के लिए. सो इन ड्यूरिंग दैट केस इट बिकम्स इजियर फॉर द शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट ऑफ हाउ मच? टू पे द अमाउंट ऑफ ₹30 पर शेयर. ओके, देन अगेन after this allotment they will get some days of say 15 days to 1 month, so they can give the amount of installment of 25 rupees, as well as they can give the amount of rupees 25 rupees. तो इससे क्या होगा? कंपनी के पास में पैसा क्या धीरे धीरे आएगा, क्योंकि एक कंपनी को सेटअप करने के लिए कंपनी के पास में एक साथ में कैपिटल उतना रेज करने का जरूरत नहीं है. ठीक है, अगेन इट विल हेल्प द शेयर होल्डर के लिए भी अच्छा है. व्हाई? बिकॉज दे विल पे द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट. Okay, so this is the way of your company's account of share capital. सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? एप्लीकेशन का पैसा, फिर हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट करेंगे, फिर क्या होगा? फर्स्ट कॉल, एंड फिर क्या होगा? सेकंड एंड फाइनल कॉल. So let us see the journal entry. Okay, the format of journal का फॉर्मेट भी बनाना पड़ेगा एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी. So I am not preparing the format of journal, but in exam you have to prepare the format date, particular, LF, debit and credit amount. Okay, so सबसे पहला एंट्री जो होगा मेरा, as you can see on receipt of application amount, कंपनी को क्या होगा? कंपनी will receive the application amount. So what will be the entry? Bank account debited. Listen, in case of company only you have to write bank account. If you will write cash account, that means you will get 0 in exam. Okay, कैश के फॉर्म में ट्रांजैक्शंस नहीं होता. So we have to write bank account debited to share application account. So this is the first entry. Okay, so let us try to understand with the help of one example. Suppose company had issued 10,000 shares. Okay, so the full shares has been subscribed by the public. ठीक है, और shares का दाम कितना है? शेयर का दाम है ₹10 each, at the rate of ₹10 each. Okay, ₹10 each है. फिर यहाँ पे सपोज दिया है ₹2 on एप्लीकेशन में कितना रुपया होगा? ₹2. ₹3 on allotment,
अलॉटमेंट में कितना रुपया देना पड़ेगा, 3 रुपया, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है, और ₹2 ऑन फाइनल कॉल। ओके, सो सपोज ये है कंपनी इशू किया 10,000 शेयर्स, तो पहला एंट्री क्या होगा मेरा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना होगा, 10,000 शेयर्स था, ठीक है, 10,000 शेयर्स कितना रुपया, एप्लीकेशन का पैसा कितना रुपया, 2 रुपया, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, टोटल 10 रुपया है, तो ये 10 रुपए का शेयर्स जो है, ओके, सो दिस इज द सेम अमाउंट ऑफ ₹10 ईच, 2 रुपया एप्लीकेशन का, दैट मींस 10,000 into 2, हाउ मच इट वुड बी, ₹20,000। okay, so amount would be bank account debited to share application, how much, ₹20,000, first journal entry। okay, again second bit क्या होता है, whatever the application amount which has been received by the company, that application amount would be transferred to the share capital। okay, so on transfer of amount to share capital, ठीक है, कंपनी क्या करता है, कंपनी एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर करेगा, शेयर कैपिटल में, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, ऑलरेडी हियर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डेबिट द अकाउंट। ओके, सो एंट्री वुड बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वहां पे क्रेडिट था, यहां पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, being the liability of the business, all liability shows your credit balance, so narration is your being amount transferred, so being amount transferred, and how much will be the amount with the same amount, how much, 20,000। okay, 20,000 रुपया उनको मिला था, same amount will be transferred to the share capital। ठीक है, now next third bit। ओके, थर्ड बिट में क्या हुआ, अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में क्या होगा, कंपनी विल मेक द अलॉटमेंट ड्यू मतलब बताया जाएगा शेयर होल्डर को हाउ मच अमाउंट दे आर रिक्वायर्ड टू पे। सो थर्ड कंडीशन इज योर व्हेन अलॉटमेंट बिकम्स ड्यू, ठीक है, जब अलॉटमेंट ड्यू रहेगा, और ये याद रखना ड्यू और पेमेंट में, ठीक है, देयर वुड बी अ डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 15 डेज पेमेंट में होता है, तो अलॉटमेंट बिकम ड्यू कितना रुपया, अलॉटमेंट था 3 रुपया, 10,000 शेयर है, 10,000 into 3 कितना हो गया, 30,000। व्हाट वुड बी द जनरल एंट्री, जनरल एंट्री वुड बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस वुड बी द जनरल एंट्री इन केस ऑफ ड्यू। ठीक है, कितना था, 10,000 into 3 कितना हो गया, ये हमारा 30,000। ओके, दिस इज अवर 30,000। सो नरेशन क्या लिखेंगे हम, being allotment becomes due, ठीक है, ओके, इतना पैसा आपका ड्यू चढ़ गया, मतलब उतना पैसा आपको देना है अलॉटमेंट का। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अलॉटमेंट मनी कंपनी को मिलेगा, दैट मींस फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, व्हेन अलॉटमेंट अमाउंट इज रिसीव्ड, जब कंपनी को पैसा मिलेगा तो मेरा जनरल एंट्री क्या होगा, पैसा आ रहा है मतलब बैंक अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना, 30,000। ठीक है, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट डेबिट है, उसको क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, सो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 30,000, और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट बिट इज व्हेन फर्स्ट कॉल अमाउंट बिकम्स ड्यू। मैं बोला कॉल मनी का मतलब क्या होता है, अमाउंट व्हिच इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना दिखाई दे रहा है हमको, 3 रुपया, 10,000 into 3 कितना, 30,000, मतलब कंपनी ड्यू, दैट मींस कंपनी बताएगा कितना पैसा देना है। सो व्हाट विल बी द एंट्री वुड बी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, टू शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी को जितना पैसा मिलेगा किसके थ्रू मिलेगा, शेयर कैपिटल का थ्रू मिलेगा। कितना होगा, 10,000 शेयर्स into कितना, 3, सो 10,000 into 3 कितना हो गया, 30,000। ओके, सो दिस इज योर 30,000। ऐसे क्या लिखेंगे हम, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट बिकम्स ड्यू का एंट्री हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ड्यू के बाद फिर क्या होगा, रिसीप्ट का एंट्री, कंपनी पहले पैसा मांगा, फिर कंपनी को पैसा मिलेगा, तो मेरा एंट्री क्या बनेगा, व्हेन फर्स्ट कॉल अमाउंट, कंडीशन क्या होगा, व्हेन फर्स्ट कॉल अमाउंट इज रिसीव्ड। सो व्हेन फर्स्ट कॉल अमाउंट इज रिसीव्ड, तो जब रिसीव करेंगे तो मेरा एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट
डेबिटेड, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना अमाउंट लिखेंगे 30,000। ओके, सेम अमाउंट, क्योंकि पूरा पैसा मिल गया है इसमें। ठीक है, नरेशन क्या, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ओके, नेक्स्ट इज योर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना रुपया था, 2 रुपया, तो कितना 10,000 इंटू कितना 2, 20,000 रुपया। कंपनी का क्या होगा, ड्यू होगा, मतलब व्हेन फाइनल कॉल बिकम्स ड्यू। सो व्हेन फाइनल कॉल बिकम्स ड्यू, तो जब फाइनल कॉल ड्यू रहेगा तो यहाँ पे एंट्री क्या होता था, पहले शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो एंट्री मेरा हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट कितना 10,000 इंटू फाइनल कॉल कितना दिखाई दे रहा है, 2 रुपया, कितना हो जाएगा 20,000। सो दिस इज अवर फाइनल कॉल का ड्यू हो गया। नरेशन क्या, बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमको पैसा मिलेगा, मतलब व्हेन फाइनल कॉल अमाउंट इज रिसीव्ड। ओके, तो कंडीशन क्या बना मेरा, व्हेन फाइनल कॉल अमाउंट इज रिसीव्ड। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, पैसा आ रहा है, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या, टू शेयर फाइनल कॉल। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना 20,000। ओके, नरेशन हम दे सकते हैं बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। सो दिस इज द वे, इसका मतलब क्या हुआ है, 2 एंट्री वी हैव टू पास फॉर एप्लीकेशन, 2 entry we have to pass for allotment, that is a due and receipt, 2 entry we have to pass for first call, that is a due and receipt, and 2 entry we have to pass for final call, that is a due and receipt. And in case of application, what we have to do, first is a receipt, second one is a transfer. Okay, so this is how we are required to pass the journal entry in the books of company. Okay, so with that, today I am completing my class today.